alaikum. How are you all? The regular viewers know me very well now. For the ones who don't, this is Sadia Abdul Qadir, your maths teacher. Welcome to the program. Alhamdulillah, last week we were able to complete the whole chapter on logarithms. हमने logarithms को बहुत detail में पढ़ा, logarithms, anti-logarithms, laws of logarithms and their applications in different situations. Alhamdulillah, we were able to complete all that. Today's lesson is based on geometrical theorems. That is, yes, we are going to start a new chapter on demonstrative geometry. Now, what's that? What are theorems? So many people are afraid of theorems. Get scared when theorems जिनके सामने जब आ जाते हैं तो. But there is nothing to be afraid of. There is nothing to be scared of. Alhamdulillah, it is something के जो कि बहुत ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आ जाता है और आ जाना चाहिए. लेकिन बस थोड़ी सी confusion से theorems के लिए दिमाग में थोड़ा सा जो डर बैठा हुआ है, इंशाल्लाह I'll try to take that off from your mind. कुछ थ्योरम्स हम देखेंगे. पहले तो थ्योरम्स हैं क्या, थ्योरम्स के एलिमेंट्स क्या हैं, देन आई विल टेक वन ऑफ द थ्योरम्स, उसको प्रूफ कैसे करते हैं, एंड द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स आल्सो इन सम ऑफ द एग्जांपल्स विल डिस्कस टुडे. सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन द लर्निंग आइटम्स. दो आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, लेकिन फिर भी लेट्स हैव अ लुक हियर. बाय द एंड ऑफ द लेसन यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब ज्योमेट्रिकल थ्योरम एंड इट्स एलिमेंट्स. Prove the following theorem and apply it to solve related problems. And the theorem that we are going to prove today is, if two lines intersect each other, then the vertical angles are congruent. Acha ji. So these are the learning outcomes for the day, for today's lesson, inshallah. Acha ji. Now, what are geometrical theorems? I do have a definition, लेकिन इससे पहले अगर हम थोड़ी सी बात कर लें इस बारे में तो वो ये कि देर आर फ्यू थिंग्स, सम रियलिटीज़ इन लाइफ जो कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसका हमें प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. सम थिंग्स, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप कहते हैं, देर आर फ्यू फैक्ट विच वी एक्सेप्ट एज इट इज़. मतलब हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें कि इसके लिए हम ये चीज़ प्रूव करें या क्या करें. वी डू एक्सेप्ट देम क्योंकि हमें पता है कि दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह ताला, हमें उसके लिए कोई लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ती. वी नो दैट यस अल्लाह ताला इज देयर, हिज एग्जिस्टेंस वी नो देयर दैट. तो उसके लिए हमें कोई रीजनिंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. हमारी एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पे वी ऑल्सो नो दैट. ज्योमेट्रिकल टर्म्स में बात करें, पॉइंट की एग्जिस्टेंस या पॉइंट की डेफिनेशन को आपको प्रूफ, पॉइंट की एग्जिस्टेंस को आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको किसी किस्म की कोई प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती. यू नो व्हाट पॉइंट इज, यू कैन डिफाइन इट. लाइन, रेज, ये सारी चीजें बेसिक डेफिनेशन है, फंडामेंटल्स हैं दैट यू एक्सेप्ट एज इट इज. ठीक है. एक और बात, जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि देयर आर 2 पॉइंट्स, then through these 2 points only one straight line can pass. Through 2 different points जो कि अलग अलग जगह पर हैं, only one straight line can pass through these 2 points. ये भी एक फैक्ट है जो कि आपने एक्सेप्ट किया है, एक पोस्टुलेट, एक फंडामेंटल है ऑफ ज्योमेट्री दैट यू एक्सेप्ट एज इट इज. इसके लिए आपको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, कोई लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ती. There is a point, only one point, infinite number of lines can pass through this point, one single point. That is also something that you accept as it is. लेकिन there are few things जिसके लिए आपको prove करने के लिए, though it is there in geometry, but to prove that you need some logical reasoning. उसको आपको कुछ prove करने के लिए कुछ reasons देने पड़ते हैं, और वो reasons आप लेते हैं जो data conditions based on fundamentals, जो facts हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, उनकी हेल्प से हम अगर कोई एक चीज प्रूव कर रहे हैं रीजंस देके, देन वी फॉर दैट वी यूज थ्योरम्स. जो कि थ्योरम्स क्या होते हैं, बेसिकली कोई भी एक स्टेटमेंट है, अगर आपको उसको प्रूव करना है एंड यू आर प्रूविंग इट थ्रू सम स्टेप्स, एंड फॉर ऑल दोज स्टेप्स यू हैव गॉट अ लॉजिकल रीजन, अ वेरी वैलिड रीजन, वो आप फिर प्रूव करते हैं, एंड दैट इज योर थ्योरम, दैट स्टेटमेंट, जिसके लिए आपको प्रूव करने के लिए रीजंस की जरूरत पड़ती है, एंड यू फॉलो थ्रू सम स्टेप्स. ठीक है. अच्छा जी,
ये तो हो गई बात, एक ओवरव्यू हो गया कि आप थ्योरम्स क्या हैं और आपको उसके लिए प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। एक और चीज, थ्योरम की वजह से आपके अंदर एक यू कैन से कि एक आपके अंदर एक पॉजिटिव चीज आ जाती है, क्योंकि आप थ्योरम को प्रूव करने के लिए गिविंग लॉजिकल रीजंस, यू आर ट्राइंग टू प्रूव योर पॉइंट, यस ये होता है एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कम टू अटेंड, कि आपको प्रूव करना है। आपके अंदर लॉजिकल रीजनिंग देने की जो एक यू कैन से एक पॉजिटिव थिंग आपके अंदर आ जाती है कि यू आर एबल टू प्रूव योर आर्ग्यूमेंट्स, यू आर एबल टू प्रूव योर सेल्फ। आपके अंदर ये खुद ब खुद एक क्वालिटी आ जाती है यू में से। तो ये एक फायदा है थ्योरम का देखा जाए तो। जरूरी नहीं है कि यू आर प्रूविंग सम ज्योमेट्रिकल एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, यू आर प्रूविंग इट इन ज्योमेट्री, नहीं, इसके अंदर से आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी में एक बात आती है। सो टेक इट पॉजिटिवली, राइट। अच्छा, geometrical theorems, what do we have here? The theorems of geometry which are proved with the help of logical reasons are called geometrical theorems. ठीक है? And the branch of mathematics in which the theorems of geometry are proved through logical reasoning is called demonstrative geometry. ठीक है? Theorems क्या हैं? Which are proved with the help of reasons, with the help of logical reasons. और मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में ये थ्योरम्स प्रूव किए जाते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। ऑलराइट, दिस इज व्हाट थ्योरम इज एंड दिस इज व्हाट डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री इज। नाउ instead of going to the theorem directly, I would like to make you familiar with the elements of a geometrical theorem. अगर आपको ये सारे elements clear हो जाएंगे at first, then you won't be surprised to see just the form of the theorem कि ये क्या इतनी बड़ी चीज आपने सामने रख दी हमारे। You need to be familiar with the elements one by one. The first one is the statement. इन सब के मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। I just have the names of these elements here. The number one is statement, उसके बाद है figure, then you have given. These are the things that you will be needing to prove the theorem. Statements, figure, given, then you have to prove, then construction which is optional, not always needed, and then proof. ठीक है? ये जो 6 एलिमेंट्स हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन इज ऑप्शनल, द रेस्ट ऑफ द 5 विल बी देयर, द रेस्ट ऑफ द 5 आर द वंस दैट यू विल सी इन ऑल द थ्योरम्स. ओके, नाउ लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर दीज. Number 1, statement. What is a statement? Description of a geometrical theorem in words is called a statement. Let me give you an example for it. For example, the sum of interior angles of a triangle is equal to 180 degrees. This is the statement of a geometrical theorem in words. The sum of interior angles of a triangle is 180 degrees. This is a very common statement, very common theorem that you have been using since maybe grade 7 and 6. लेकिन उसका रीजन क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, हम इंशाल्लाह अगले कुछ लेसन्स में देखेंगे. सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम. और आज का जैसे कि अभी आपने लर्निंग आउटकम्स ऑफ थ्योरम की स्टेटमेंट देखी थी, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, द वर्टिकल एंगल्स आर फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट. This is also statement of the geometrical theorem. That is description of a geometrical theorem in words. It's called a statement. This statement in general is written in the form of an expression. Okay? अच्छा, अभी जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दी थी, they were of different, like एक थी कि if two lines intersect each other, if two lines intersect each other at a point, then the vertical angles of formed are congruent. कुछ statements की form इस तरह से होती है जिसमें if then use होता है. And some of them are like the sum of interior angles of a triangle is 180 degrees. Two different forms of statement. Okay, given. The first part of the statement usually starting with if two lines intersect each other at a point. So the first part usually starting with f, which describes the conditions given in the statement is called given. मतलब ये कि कोई एक पार्ट स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट यूजुअली जो इफ से स्टार्ट होता है, बट नॉट ऑलवेज. अगर किसी स्टेटमेंट में इफ नहीं है
तो you would say कि यहाँ तो कुछ given ही नहीं है. No, it's not like that. That is why it's written usually starting with a if, which describes the condition given in statement is called given. अब जब मैं आपको एक theorem बताऊंगी, I'll tell you कि उसमें given क्या चीज़ है. अच्छा जी, figure. Now, in the light of the statement, the complete drawing of all the points, lines, angles and geometrical concepts is called a figure. In light of the statement, you will be only given a statement. ठीक है. अब उस statement को use करते हुए you are going to write down what is given to you. Then, in light of that statement only, you are going to draw a figure based on the conditions given to you. Are you able to make links now? Statement is given to you. In light of that statement, आपने देखा कि आपने jot down कर लिया, okay, this is given, this is given, this is given. अब जो चीजें आपको given है, based on that you are going to draw a figure and you'll see the statement के given क्या था, that everything should be there in the figure. Also, something that's needed to prove should also be there in the figure. The result or results which are to be proved relative to the figure are called as to prove. ठीक है. स्टेटमेंट आपने देखी, आपने उसमें स्टेटमेंट से गेस किया और आपने मतलब समझा स्टेटमेंट को और आपने देखा अच्छा ये चीजें गिवन है, सो एंड सो इज गिवन, सो एंड सो इज टू प्रूव. अब वो सारी चीजें यू आर गोइंग टू have in your figure. That is why it say the result or results which are to be proved relative to the figure are called to prove. ठीक है. I'll repeat. Statement में से given data आपने extract किया, note it down. What is to prove? Note it down. Based on that, what is given, what is to prove? Draw a figure. ठीक है. And all that is linked with the statement of the theorem. You'll be able to get it more when we will do one of the theorems. We'll prove one of the theorems. Next part is, which is optional, not always needed. It's construction. Sometimes we require addition in the given figure. Sometimes we require addition in the given figure, which is very much necessary for the proof of the theorem. कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमारे पास जो गिवन कंडीशंस हैं दैट आर नॉट इनफ फॉर द प्रूफ. मतलब जो आपके पास गिवन कंडीशंस के हिसाब से आपने जो फिगर ड्रॉ की है दैट इज नॉट इनफ फॉर द प्रूफ. दैट इज नॉट इनफ दैट फॉर द प्रूफ का मतलब ये हुआ कि जो चीज आपको प्रूव करनी है उसके लिए फिगर आपके लिए इनफ नहीं है. उस फिगर में आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है. And this addition to the in the figure is called construction, but it's not always needed. Okay, कभी कभार ऐसी situation आती है. When we'll do such theorems, I'll tell you कि आप कैसे identify करेंगे construction यहाँ जरूरी है या नहीं. Okay. Next is proof. That is the most important part of the theorem. It says the most important part of the theorem is called proof, which consists of statements and facts of the statements which concludes that are required results. See, the most important part of the theorem which consists of statements and facts of the statements which concludes that a required result. वो जो statement at first दी हुई थी that is something different. अब जो proof है, proof itself consists of two things. एक तो आपने जो जो चीज आप प्रूव कर रहे हैं उसके लिए आप कोई ना कोई स्टेटमेंट देंगे. ओके, फॉर दिस प्रूफ यू आर गोइंग टू डू दिस दिस दिस. हमने ये काम किया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल. अभी जब करूंगी तब ज्यादा क्लियर होगा. अब जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं इन द प्रूफ, यू मस्ट गिव द रीजन फॉर दैट. कोई एक स्टेटमेंट आपने लिखी, उसके ही साथ आपने उसका फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट बताया. दैट इज द लॉजिकल रीजन आपने बताया. जैसे कि मैंने आपको फैक्ट्स की बात की थी ना, वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स and infinite number of lines can pass through one point. That's actually a fact. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पर जब आप देखेंगे कि आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, you'll have to give the fact of the statement, the reason of the statement, something that is fundamental, something that is considered true in all the cases. So this will take you to the required result, or maybe if it's more than one, then results. Right. So that was about the elements of the theorem.
कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हमने देखे? हमने देखा the first is statement, that's the statement of the theorem, description of the theorem, then it's given, then we have the figure, then what is to prove, then construction if needed, and then in the end the proof itself. Okay, अब जो है आपके पास there is a theorem that you will be proving. जो आज हम थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, द स्टेटमेंट इज इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्राई टू गेट व्हाट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम एंड आई एम गोइंग टू बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. Welcome back. So I've just given you one of the theorems and I asked you to think about it कि इसमें क्या given है और क्या prove करना है. So this is what we call the statement of the theorem, description of theorem in words. If two lines intersect each other, then the vertical angles are congruent. देख के आपको क्या समझ आ रहा है? There are two lines which are intersecting each other. Definitely two lines intersecting each other. There is one common point. अच्छा, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू गेट के टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एक कॉमन पॉइंट पर, इसीलिए आपके पास कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे. अच्छा, वर्टिकल एंगल्स. व्हाट आर वर्टिकल एंगल्स? वर्टिकल एंगल्स हैं क्या? इंटरसेक्टिंग मीन दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, दे आर टचिंग ईच अदर, दे आर मीटिंग ईच अदर एट अ पॉइंट. वर्टिकल एंगल्स क्या हैं? नाउ फॉर वर्टिकल एंगल्स लेट मी एक्सप्लेन व्हाट वर्टिकल एंगल्स आर. Two lines intersect each other. I have a line and another line intersecting each other at a point. How many angles are formed? 1, 2, 3 and 4 angles are formed. अब vertical angles क्या होते हैं? Vertical angles बताने से पहले let me tell you another form of angle that is formed that are adjacent angle. Adjacent angles वो होते हैं कोई भी दो, मैं फिलहाल दो angles की बात कर रही हूँ. Two angles which are whose vertex is which share the common vertex, जिनका vertex common हो. जैसे कि अगर मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि in this case if I consider these two angle, ये वाला और ये वाला एंगल, तो इनका vertex ये हो गया and they have one arm common. क्या कह रही हूँ मैं? This is their vertex and they have this arm common. So this and this, they are adjacent angles. Now adjacent angle on straight line, they are adjacent supplementary angles. Adjacent angles सिर्फ वो हैं जैसे कि ये angle भी there are two angles, this one and this one. इनका common vertex है, they have one arm common. कि ये arm जो है ये इस angle के साथ भी है और यही वाला arm इस angle के साथ भी. They are adjacent angle. But what makes them adjacent supplementary angles? कि अगर they are on a straight line and some of them will be equal to 180 degrees. ठीक है, इन दोनों का sum. So they are adjacent angle. But what vertical angles are, that's our concern today. Vertical angles are those इनका common vertex जरूर है, that is this, but they do not have the any arm common. और दूसरी बात ये कि they are on the opposite sides of the vertex. So this angle and this angle, they will be called the vertical angles. ठीक है, this angle and this angle, they are called the vertical angles. This and this, they will also be called the vertical angles. क्यों? क्योंकि इनका भी common vertex हो गया and they also have their, they are also on the opposite sides of the vertex and they do not have the common arms. Right? तो ये तो हो गई vertical angles की बात. Now next is, what do you have to prove? You have to prove that when two lines intersect each other, the vertical angles are congruent. What do you mean by congruent? अब congruency again is a different concept.
अगर आप दो चीजों के इक्वल के बारे में बात करते हैं कि ये दो, कि जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि इस बोर्ड की लेंथ और विड्थ, इफ आई जस्ट से दैट लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल है, तो उसके लिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुझे इनकी मेजरमेंट्स भी मालूम होनी चाहिए कि इसकी लेंथ जो है सो एंड सो सेंटीमीटर्स और ब्रेथ सो एंड सो सेंटीमीटर्स एंड दे आर इक्वल. So if I'm saying equal, I know that yes, I know the measurements also and it's clear. If I'm saying congruent, तो congruent में दोनों बराबर तो हैं, but it in no way tells us कि उनकी measurements क्या हैं. It's just that they are congruent. They are दोनों बराबर हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की measurements हमें नहीं मालूम. So when in congruency we are not actually dealing with the measurements. In equal things we are actually dealing with the measurements. सही है. अच्छा जी, अब यहां पर जब हम कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव टू लाइन्स intersecting each other. So let me take two lines intersecting each other, one line, another line. Okay, now two lines. So from this I have a very clear idea that two lines intersecting each other. Let me give the names to these lines. Let me say that one of the lines is AB, another line is CD. So two lines AB and CD intersect each other at point O. This is what I get from this statement. Two lines intersect each other. तो मैंने क्या देख लिया, given में मेरे पास क्या होगा, there are two lines AB and CD, नाम मैंने खुद दे दिए, and they intersect each other at point O. Now what is to prove? Then the vertical angles are congruent. Vertical angles identify करके, now let me give the names to these vertical angles. Come on, what are vertical angles? This one. Okay, let's say this is angle 1. This one. Okay, first of all I am giving the names to all four angles, फिर मैं बात करूंगी कि vertical angles कौन से, ठीक है? Let me give the names to all four angles. This is angle 2, this one is angle 3, and this one is angle 4. Now out of these four, what are the two pairs of vertical angles? This and this. Angle 1 and angle 3, they are vertically opposite angles, ठीक है? Common vertex है इनका, and the angles on the opposite sides of the vertex, and you may say the arms on the opposite sides of the vertex, no common arm between them. So 1 or 3 we have to prove that they are congruent. Actually this is the symbol for congruency, okay? Right. And angle 2 and angle 4, these are also congruent. This is something we have to prove, ठीक है? This is something that we have to prove. We have to prove that the vertical angles are congruent. We see that there are two pairs of vertical angles. One of them is angle 1 and angle 3. Another one is angle 2 and angle 4. And we have to prove that these are congruent. Angle 1 और angle 3 बराबर है, angle 2 और angle 4 बराबर है, ये हमें prove करना है, ठीक है? अच्छा जी, अब you may say कि ये तो देखने में equal लग रहे हैं. If you are getting it like this, कि तो देखने में equal लग रहे हैं, ठीक है, लग रहे होंगे आपको देखने में इक्वल, बट दिस, यही तो बात आ गई ना थ्योरम्स की, कि हमें देखने में बराबर लग रहे हैं, बट वी विल हैव टू गिव लॉजिकल रीजन, वी विल हैव टू प्रूव इट कि ये बराबर हैं, ठीक है? एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. अभी तक हमने क्या किया? हमने ये देखा व्हाट इज गिवन, वी हैव अ फिगर विद अस, वी हैव आइडेंटिफाइड व्हाट डू वी हैव टू प्रूव. Now we'll start our proof. Construction needed है यहाँ पे, बिल्कुल यही फिगर ड्रॉ की थी हमने. Construction needed है, बिल्कुल नहीं जरूरी. Two lines intersecting each other, four angles are formed. We have identified which one of these are, which of the pairs is vertical opposite vertical angles, और हमने ये भी देख लिया कि हमें क्या proof करना है. No extra construction in this figure needed. So that's it. All right. Now again, as I said earlier, proof consists of two parts, statements and reason. Whatever statements you will give to prove this result, you'll have to give the reason to that. आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि ये जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी होगी, you'll have to give reasons कि भाई अगर हम यहाँ ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उसका रीज़न ये, that is fact, that is reality, that is accepted, so because of it, that I am writing this statement.
वो होता है ना कि आपको कोई चीज प्रूव करने को कही जाती है, देन यू हैव टू प्रूव, जब आप प्रूव करें आपको रीजन भी बताना पड़ता है, जी हाँ ये ऐसे होता है, सो एंड सो इज द रीजन। यहाँ पर भी वही बात है, जैसे बिल्कुल बातों में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं यू हैव टू प्रूव, तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो इफ वी स्टार्ट विद इट, तो पहली स्टेटमेंट, जैसे कि अभी आपने आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कुछ बताया था कि द एंगल्स ऑन अ लाइन, आपकी स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके ऊपर, अगर इफ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, सो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है हमेशा दैट इज 180 डिग्रीज। ठीक है, इस तरह भी ले सकते हैं ना कि आप सर्कल की पूरी रेवोल्यूशन ले रहे हैं, दैट्स 360 डिग्रीज, पूरी रेवोल्यूशन हाफ ऑफ इट, तो स्ट्रेट लाइन आती है आपके पास, दैट गिव्स यू 180 डिग्रीज। इफ यू डोंट गो फॉर दैट, सिंपल स्ट्रेट लाइन पर कौन सा एंगल आता है, 180 डिग्रीज। या अब इसी स्ट्रेट लाइन पर एज मेनी एंगल्स एज आई ड्रॉ, मैं इसको डिफरेंट एंगल्स में डिवाइड कर दूं, तो इन सब का सम क्या होगा, द सम ऑफ ऑल दीज विल बी इक्वल टू 180 degrees, sum of all the angles on a straight line with one common vertex, definitely. इसी तरह से if I consider, let's say I consider this straight line, ठीक है, और इस पर मैं ये वाले एंगल 1 और एंगल 2 कंसिडर कर रही हूँ, एक ये वाला एंगल 1 and this angle 2, they are on a straight line, so their sum is equals to 180 degree, and the reason is supplementary angles postulate. Supplementary angles postulate क्या है, supplementary angles sum equal to 180 degrees, their angles on a straight line. This is a postulate. Postulate is something that is a fundamental statement, that is a fact which is accepted, yes, which is accepted, which is true and which is accepted as it is. तो ये वाला फैक्ट था जो कि स्ट्रेट एंगल्स पे जो सम ऑफ एंगल्स होता है विद कॉमन वर्टेक्स इज 180 डिग्री, दैट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट। अगर इसी तरह से मैं ये देखूं जिस तरह एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम 180 डिग्री है, इजंट इट सो कि एंगल 3 और एंगल 4 का भी सम 180 डिग्री होगा, एंगल 4 इज दिस, एंगल 3 इज दिस, होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। एंगल 3 और एंगल 4 का भी सम जो है वो 180 डिग्रीज होगा। इसी तरह से कैन आई से कि एंगल 1 और एंगल 4 का भी जो है सम 180 डिग्री होगा, बिल्कुल उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3 का भी सम 180 डिग्री होगा। लुक एट दिस, आपने ये कंसिडर की लाइन, ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया, आपने ये कंसिडर की, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। कंसिडर दिस अगेन ऑन द राइट साइड, sum is 180 degree. Now if you consider this line, the sum of angle 2 and 3 180 degree. अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिया है हमने, एंगल 1 एंड एंगल 2 ले लिया है, और साथ में एंगल 3 एंड एंगल 2 ले लिया है। ये देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 2 के बाद एंगल 2 एंड एंगल 3 ले लिया है, ये वाला। क्यों, इसका रीजन ये है कि व्हेन यू टेक angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree, then again you take angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree, give this equation the name 1, give this equation the name 2. अब देखिए क्या किया, since both of the equations equal 180 degree, दोनों equations का sum 180 degree हो गया, that means दोनों equations बराबर हो गई, that means major angle 1 plus major angle 2 is equals to major angle 2 plus major angle 3. That is why we have written from 1 and 2. This is the logical reason. पहले इसका रीजन क्या था, सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट, इसका भी रीजन क्या था, सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट। लेकिन यहाँ पे क्या किया, सिंस बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 180 डिग्री, सो इट्स क्वाइट क्लियर कि ये दोनों इक्वेशंस भी बराबर होंगी। दैट इज वी हैव रिटन फ्रॉम 1 and 2 वी सी दैट दे आर इक्वल। एक और बात अगर आपने यहाँ नोटिस की हो तो एवरीवेयर यू कैन सी major angle 1 plus major angle 2 is 180 degrees. Here we are talking about the measurement, the values of the sum, so that is why we are using equal to and we are using measure. ठीक है, measure angle 1, measure of angle 1 plus measure of angle 2 is equal to 180 degree. Equal congruency की जो बात करी थी ना, it will be more clear in the next few statement के दोनों को एक दूसरे से differentiate कैसे करते हैं।
I'll continue this proof after a short break, inshallah. Stay tuned. Welcome back. Let's continue with the proof of the theorem that we are doing. We are on the third statement that we have written. Measure angle 1 plus measure angle 2 is equals to measure angle 2 plus measure angle 3, and that's what we have got from these two equations. Since both of the equations are equal to 180 degree, तो दोनों equations eventually बराबर हैं. अच्छा जी. अब now if you see what's common to these two, measure angle 2 and measure angle 2, तो अगर मैं दोनों तरफ से दोनों साइड्स पर मेजर एंगल 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, डेफिनेटली इक्वेशन है whatever I do on this side I'll have to do on this other side also. तो अगर मैं दोनों साइड पर मेजर एंगल 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, what will I be left with? I'll be left with this, isn't it? मैंने क्या किया, दोनों साइड पर से मेजर एंगल सब्ट्रैक्टिंग मेजर एंगल 2 फ्रॉम बोथ साइड्स. इफ आई सब्ट्रैक्ट मेजर एंगल 2 ऑन बोथ साइड्स, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. So I'll be left with measure angle 1 is equal to measure angle 3. Isn't it something that we had to prove? The vertical, one of the pairs of vertical angles is measure angle 1 is equal to measure angle 3. That's what we have done here. अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह से अभी मैंने क्या कंसिडर किया था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 2 एंड एंगल 3. अब अगर मुझे, तो उसमें एंगल 2 कॉमन था एंड देन वी सब्ट्रैक्टेड इट. अगर मुझे एंगल 2 और 4 लेट्स से प्रूव करना है, व्हाट कैन आई डू? I can take the sum of measure angle 2 and measure angle 3 is 180 degree, and I can take the sum of measure angle 3 and measure angle 4 as 180 degree. ठीक है, बिल्कुल यही steps follow करके, and then angle 3 will be common to both sides of the equation, that will be subtracted and you will get measure angle 2 is equals to measure angle 4. अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पर values of the angle की बात हो रही थी, we were using m. Now since we just had to prove regardless of what do they measure these angles, हमें क्या प्रूव करना था कि दोनों बराबर है. ठीक है, so now we can just do away with this measure क्योंकि हमें congruency एक generalized result प्रूव करना था. So hence we can write angle 1 is congruent to angle 3 and angle 2 is congruent to angle 4. This is something which we have proved. मुश्किल था? I don't think so. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था. Right? Okay, so these are the steps, these are the processes, these are the elements that we had to consider. This is the process which we had to follow to prove any statement as and we consider it as a theorem, and we go through these elements and we prove some of the results. अच्छा जी, ये हो गया आपका theorem proof. If अब जो कि आप something that you have been doing लेकिन थ्योरम को प्रूफ नहीं करते, लेकिन ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वर्टिकल एंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी वाला. लेट्स सी हाउ कैन वी अप्लाई इट इन दिस केस. फाइंड द वैल्यू ऑफ b इन द गिवन फिगर. देयर इज अ फिगर b, you can see b here, you can see 3b here, you can see 2b here. You have to find the value of b. Now what we are going to do is we will see that there are 3 lines intersecting each other at a point. We'll consider 2 of them. We'll make use of the vertical angles. कैसे? Let's see. If I consider maybe I can consider this line, ठीक है, and I can consider this line. अच्छा, now in this case you can see that these 2 lines are intersecting each other at a point, and this angle and this angle, aren't they vertically opposite angle? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर दे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? आर दे वर्टिकल एंगल्स? यस, वी हैव जस्ट नाउ प्रूव्ड दैट वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो अगर ये बी है तो ये एंगल भी बी हो गया. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू सी? नाउ there is one straight line
There are 3 angles lying on this straight line, 2b, b and 3b. Now we can make use of the supplementary angles postulate. Can I write 2b plus b plus 3b is equals to 180 degrees? Reason? सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट. और इससे पहले हमने इसको b कैसे ले लिया था, हमें इन तीनों का सम लेने के लिए वी नीडेड दिस एंगल, एंड फॉर दिस एंगल वी नीडेड टू नो कि ये दोनों बराबर है या नहीं. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. यू मे टेक दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्टिंग, तो ये 2b और ये वाला 2b यहाँ आ जाता. दे वुड हैव बीन वर्टिकल एंगल्स. अच्छा, 2b add b add 3b would be 6b to 180 degrees. So b is equals to 30 degrees. This is what you had to find, right? Okay, so this was first something in which we applied the concept of vertical angles and then the supplementary angles postulate. Another one of the same sort, value of x in the given figure. Come on, quickly. अब कैसे find करेंगे? Again same concept is being applied. Either what you can do is you can take this and this line as intersecting each other. So this angle would be vertical to, you are right, this angle. और पिछले वाले में हमने इन दोनों को लिया था, नहीं इसी को लिया था, right? खैर, तो ये आपके पास हो गए ये तीनों angles. Again if you consider this straight line, these 3 angles will sum up to, what is this angle? Quickly, yes, 90. Good, 90 degrees. Again they sum up to 180 degrees. So 3x is equals to 180 minus 90 is 90 degrees and x is again 30 degrees. Coincidence. Okay, तो वर्टिकल एंगल का हमने कॉन्सेप्ट यूज करते हुए यहाँ पर फाइंड कर लिया कि आपके पास x की वैल्यूज क्या है. एंड फर्स्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया, देन अगेन the supplementary angles postulate. Acha, this was about today's lesson. The theorem, first of all, theorem, what is theorem, what are the elements of theorem, then we proved one of the theorems and then we applied that theorem in different examples. Acha ji, let's go for the multiple questions, choice questions for today. The first one, in the given figure, one of the pairs of alternate angles is angle 1 and angle 2, option B angle 1 and angle 3, option C angle 2 and angle 3, and option D angle 2 and angle 4. Which one of these represents a pair of alternate angles? Next one, the value of A in the given figure is it 47 degrees or is it 80 degrees or 94 degrees or 130 degrees? Option A is 47 degrees, option B 86 degrees, option C 94 degrees, and option D 133 degrees. The next one, in the given figure the value of x is option A 40 degrees, option B 50 degrees, option C 90 degrees, and option D 140 degrees. Which one of these is correct? Look at these very carefully and send us the answers to 16969. I'll be waiting for your responses. That's all for today. See you next week inshallah. Take care. Allah Hafiz.